No, ma'am, here. No, ma'am, center. No, ma'am, here. Ma'am. Anything that happens to you, how many years you feel bad? The audience interaction. Let people अभी क्या कहना चाहूँगी, अभी तो ऑलरेडी कुछ दोस्तों मेरे जो काफ़ी टाइम से नहीं मिले हैं, I've seen them, दोस्तों के साथ कुछ कॉमेडी देखने का मौका मिल रहा है, स्पेशली इम्प्रोव और एक शो जो हम बचपन से देखे आए हैं, तो Whose Line Is It Anyway, जिनके स्टार्स आए हैं कॉलिन और ब्रैड. तो आई लाइक कॉमेडी, आई लाइक लाफिंग, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हैविंग अ गुड लाफ. क्योंकि सुबह में आप इतनी बड़ी फिल्मों में नज़र आती हैं और अच्छी फिल्मों में नज़र आती हैं, सैफ अली खान प्लानिंग कर रहे हैं कि आपके लिए कोई अच्छी स्क्रिप्ट के लिए कोई अच्छी? नहीं, बिल्कुल. आप अभी तो 10-11 साल हो गए हैं, आप हमारी फैमिली को समझ चुके होंगे कि हमारी जो करियर्स हैं बहुत अलग अलग हैं. अम्मा की अलग करियर है, कन्या जी के अलग है, भाई के अलग है, मेरी अलग है, और हम अलग अलग ही रखना चाहते हैं. एज अ फैमिली वी आर देयर फॉर ईच अदर इमोशनली, बट प्रोफेशनली इट्स ऑल सेपरेट. स्क्रीन पे अभी तो बहुत कुछ हो रहा है. अभी इंटरेस्टिंग, तभी तो मैंने स्पेल भी होस्ट किया था डिस्कवरी पे, जो बहुत ही अच्छा था बच्चों के साथ. एक फिल्म है 1984, उसका नाम है एक्चुअली October 31st, जो 1984 राइट्स हुए थे उस पे है. सो दैट विल बी माई नेक्स्ट रिलीज. थैंक यू. Yeah, I'm very excited about this evening. I think it's a great way to relax and unwind in the midst of such turmoil that's going on in the world all around us. I'm a big fan of improv and stand-up comedy, and particularly I've been following Colin, Mokri and Brad Sherwood for a long time. Anu Menon herself is very good, so I'm looking forward to the evening. हाँ, लाइव देखा है पहले. मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ कॉमेडी का, इम्प्रोव का, तो मैं बहुत बार देख चुकी हूँ. आई रियली एंजॉयड. अभी आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ कल्पना मैम, आपने एक था लाइन में बहुत डराया था, अब आप फिर कब डराने वाली? अच्छा, अभी तो now I've just finished directing my own film, Death in the Gun. So hopefully that will release next. Thanks so much. What would you like to say about the series?
I'm actually looking forward to it. I've heard Whose Line Is It Anyway is a lot of fun, and I've never watched it live before, so I'm very excited to be here. Actually, right now I'm going to study in Los Angeles next month, so well, I'm just taking a sabbatical to concentrate on polishing my skills a little bit more and coming back. Thank you so much. Thank you. What would you like to say about this evening? I'm really looking forward to this evening क्योंकि मैंने इनको टीवी पे बहुत देखा है and ये पहली बार मैं उन्हें लाइव देखने वाली हूँ and I think it's going to be a lot of fun and a lot of laughter, so I'm really looking forward to it. मूवी डायरेक्ट कर रही हूँ? रियली कहाँ से सुनने में आया? मुझे भी बताइए. जी अभी रिसेंटली मैं सिर्फ मैं जो पिक्चर कर रही हूँ वो अन्ना हज़ारे की बायोपिक है, नाम है अन्ना, और वो अभी रिलीज़ होने वाला है. I'm a big comedy fan. I love watching comedy. So even if I was home after a long day of work, I would just sit with my wife and just chill and just watch some comedy. But to actually be here live in front of Colin and Brad, it's amazing because I'm a huge fan of Whose Line Is It Anyway. And even last time when they were here, I was lucky enough to be on stage with them, and they made a bit of a song about me, and it was great. That time I got my parents. And I'm really excited, man. And events like these need to happen way more often. Yeah. बहुत ऐसा कुछ अगर स्ट्रेसफुल दिन हो, आज मैं सुबह से शूट कर रहा हूँ और पूरे शूट के दौरान मैं यही सोच रहा कि शाम को एक बहुत ही इजी इवनिंग होने वाली है, एंड दैट मेड माई टफ डे ईजियर बिकॉज अगर अनवाइंड करने के लिए एक ऐसी शाम हो जहाँ पर आपको बहुत सारी हंसी आए, बहुत सारे लाइक माइंडेड लोग एक साथ मिले, उससे कुछ अच्छा तरीका नहीं है अनवाइंड के लिए. आने वाले कोई प्रोजेक्ट्स नहीं मेरे पास. रोडीज चल रहा है ऑलरेडी. आई एम शूटिंग फॉर स्प्लिट्सविला वेरी सून. मैं खुद का इंटरनेट पे काफ़ी सारे वीडियोस कर रहा हूँ स्क्वाड्रन के. दे वेरी स्पोर्टी, दे वेरी एथलेटिक काइंड ऑफ कंटेंट. अरे का एक नया पूरा पोर्टल शुरू हो रहा है, उसमें एक शो किया हमने. तो काम चलता रहता है, बट आई थिंक काम के बीच में अगर आप आराम कर सकते हैं या ऐसा कुछ कोई इवनिंग स्पेंड कर सकते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज एक्सपीरियंसेस इन लाइफ आर वेरी इंपॉर्टेंट. काम तो चलता रहता है. Thank you so much. Thank you guys. Okay, Madhurima, are we rolling? Madhurima, I want to know that what would you like to say about this event? Well, firstly, I love Whose Line Is It Anyway? We've all seen it, grown up on it. Now I'm really excited, looking forward to it, to see it live. And to be a live audience is, I think, amazing. TV पे देखना, it's one thing, and then to be live, to watch people perform. I love stage. Madam, there's one thing कि आपके viewers आपको मिस करते हैं और चाहते हैं वो आपको दोबारा देखें. मैं भी उन्हें बहुत मिस करती हूँ, और स्पेशली जब आजकल की फिल्में देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है ये रोल मुझे करना चाहिए था, ये रोल मुझे करना चाहिए था. आई रियली फील मूवीज़ हैव कम ऑफ एज एंड देयर आर फैंटास्टिक रोल्स फॉर लेडीज़, फॉर गर्ल्स, फॉर हीरोइंस. एंड जो बहुत सारी जो टैबूज़ हुआ करती थी कि इफ़ यू आर मैरिड, इफ़ यू आर अ मदर, यू कांट डू दिस, मेरे ख्याल में से वो सारी चीज़ें काफ़ी हद तक कम हो गई हैं. एंड आई रियली होप दैट आई फाइंड अ गुड रोल एंड वेयर आई कैन कम बैक एंड बी देयर. कुछ बताना चाहेंगे जो रोल मिला है? नहीं, एक्चुअली अभी इस वक्त आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, और मैंने साउथ में शुरू कर दिया है. आई डू फॉर द लास्ट 2 years आई बीन डूइंग सम फैंटास्टिक वर्क इन द साउथ. एंड यू नो ऑब्वियसली मुझे वो सिंगिंग अराउंड द ट्रीज़ वाले रोल्स तो नहीं मिलते, बिकॉज पर अच्छे कैरेक्टर्स मिलते हैं. एंड कैरेक्टर्स में हमेशा ऐसा होता है कि मैं या तो हीरोइन की माँ या हीरो की भाभी या ऐसा कुछ. डेफिनेटली दे गिव मी सम सच रोल्स, बट दे गिव मी अ टैग लाइन यंग मदर. तो मैं फ़ोन पे पूछती हूँ कि क्या रोल है. यंग मदर मैम, जैसे अमित जी का जो हुआ करता था टैग एंग्री यंग मैन, आई हैव अ टैग लाइन गोइंग फॉर मी, यंग मदर. So, well, that's just a joke, but I'm really hoping that young mothers and a strong character. I've done some fantastic role in the South, और मैं उम्मीद करती हूँ कि बॉम्बे में भी कुछ
लोग you know the producers give me a fantastic role so I can come back and be where I belong, where I want to belong, where I love being. विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। Thank you. देखिए ये यूनिक इवनिंग्स लाते हैं हमारे लिए, एक यूनिक एक्सपीरियंस लाते हैं, तो ये स्पेशल है। और स्पेशली ये जैसे ये लोग लेके आए हैं, ये कमेडियंस जो लेके आए हैं, वो इतने टैलेंटेड हैं कि आई थिंक ये पहली बार हो रहा है कि हमें ये चांस मिल रहा है उन्हें देखने के लिए लाइव, सो दैट्स स्पेशल। Okay, this is called easy evening. So how do you make it yourself evening or in their stressful बेसिकली जस्ट एज आई वाज टेलिंग दीज गाइज, आई मीट अप विद फ्रेंड्स, दोस्तों से मिलते हैं, थोड़ा सा बातचीत होती है, आप यू हैव अ कपल ऑफ ड्रिंक्स एंड यू गो आउट, वॉच अ फिल्म, दीज आर द वे। आगे आने वाले I'm doing Dangal with Amir Khan, and I've got 2-3 films in talks. I'm doing a Marathi film as well. So थोड़ी चीज़ें बात हो रही है, देखते हैं क्या क्या मटेरियलाइज होता है। सर या कॅमेऱ्याला बघा इकडे सांग। क्या कहना चाहेंगे इस इवेंट के बारे में? Pardon? क्या कहना चाहेंगे इस इवेंट के बारे में, फंक्शन के बारे में? ये फंक्शन बहुत अच्छा है बिकॉज वी आर हैविंग सम वेरी गुड कॉमेडियन फ्रॉम अब्रॉड जो हम लोग टीवी पे देखते आ रहे हैं। सम वी हैव बीन वाचिंग ऑन टीवी एंड टुडे वी गोइंग टू हैव देम लाइव। नाउ वी हैव टू सी हाउ दे डू इट हियर on the TV is okay, but anyway even there they used to have a continuous shot. There was no prompting or any lines being given. They're going to do the same over here. Let's see, मजा आएगा। सर काम में के बहुत सारा स्ट्रेस होता है, दिस इज इजी इवनिंग्स, तो आप अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए क्या चीज़ें करते हैं? Pardon? I didn't hear you. सर काम के बाद बहुत स्ट्रेस होता है, तो आप अपने स्ट्रेस को दूर करने के लिए क्या करते हैं? दिस इज कॉल्ड इवनिंग। भैया पहले ये था ग्रुप के साथ बैठे गपशप होती है, एक आध दूसरा मार लेते थे, आजकल नहीं होता है वो। एट माई एज इट जस्ट घर जाओ विथ माई ग्रैंड डॉटर, मज़ा करो, खाना खाओ और सो जाओ, दैट्स ऑल। थैंक यू सर। एज मेक्स अ डिफरेंस। थैंक यू, बाय।